Jai Shri Mataji to everyone. So let's start today's session by uh, raising our Kundalini and taking the बंधन. जय श्री माता जी सभी को अपना आज का सेशन शुरुआत करते हैं कुंडलनी उठाकर बंधन लेते हैं. I'm going to share my screen and let's start with the Shri Teen Mamant. Uh, Please let me know if my voice is am I audible or not. I'm going to start. Jai Shri Mataji. Now let's ask Mother for today's session permission. आइए श्री माता जी से आज के सेशन की परमिशन मांगते हैं. परम पूज्य श्री माता जी, माँ कृपा करके हम बच्चों को आज के सेशन की अनुमति दे दीजिए. मदर, प्लीज ग्रांट अस परमिशन फॉर टुडेज सेशन.
जय श्री माता जी। प्रीति दीदी, वुड यू लाइक टू कंडक्ट मेडिटेशन? Um, I was actually very curious to see how you guys do the meditation. Okay, okay. As you No wish. worries, no worries. Yeah, we'll just do the balancing. So let's start. So हम लोग संतुलन करेंगे. Let's put your right hand on Mother Earth. अपना दाहिना हाथ धरती माँ पर. लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर. लेफ्ट हैंड. नाउ लेट्स प्रे. माँ से प्रार्थना करते हैं. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो. श्री माता जी, यू आर श्री महाकाली. माँ, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो. आप ही साक्षात श्री भैरवनाथ हो. मदर, यू आर श्री महाकाली एंड यू आर श्री भैरवनाथ. माँ, कृपा करके हमारी पीड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए. मदर, प्लीज क्लेंस अवर लेफ्ट साइड. प्लीज क्लेंस अवर ईड़ा नाड़ी. माँ, हमारी ईड़ा नाड़ी को आप शुद्ध कर हमें शुद्ध इच्छा शक्ति प्रदान कर दीजिए. मदर, प्लीज क्लेंस अवर ईड़ा नाड़ी एंड ग्रांट अस द पावर ऑफ grant us the power of pure desire. अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर महसूस करेंगे वाइब्रेशंस को. लेट्स फील द वाइब्रेशन ऑन आवर लेफ्ट हैंड. नाउ वी विल डू बैलेंसिंग ऑफ आवर राइट साइड. तो अपनी पिंगला नाड़ी की सफाई संतुलन में लाते हैं. राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर. राइट हैंड टुवर्ड मदर, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स स्काई. नाउ लेट्स प्रे. मदर, यू आर श्री महासरस्वती. प्लीज क्लेंस आवर पिंगला नाड़ी. माँ, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो. कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी को साफ कर दीजिए. हृदय से बोलिए. से इट बाय हार्ट. मदर, यू आर श्री महासरस्वती. प्लीज क्लेंस अवर राइट साइड, अवर पिंगला नाड़ी. माँ, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो. प्लीज हमारी पिंगला नाड़ी की सफाई कर दीजिए. मदर, यू आर श्री हनुमान. प्लीज क्लेंस अवर राइट साइड. माँ, आप ही श्री हनुमान, साक्षात श्री हनुमान हो. हमारी पिंगला नाड़ी की सफाई कर दीजिए. माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को साफ कर हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कर दीजिए. मदर, प्लीज क्लेंस अवर राइट साइड एंड ग्रांट अस द पावर ऑफ प्योर एक्शन. महसूस करिए अपने राइट हैंड पर वाइब्रेशंस को. फील द वाइब्रेशन ऑन अवर राइट हैंड. नाउ लेट्स कीप बोथ हैंड टुवर्ड मदर. अपने दोनों हाथ श्री माता जी की ओर. पुट योर अटेंशन ऑन सुषुम्ना नाड़ी, चित्त सुषुम्ना नाड़ी पर. नाउ लेट्स प्रे टू मदर. मदर, यू आर श्री महालक्ष्मी. यू आर श्री गणेश. प्लीज ग्रांट अस द स्टेट ऑफ बैलेंस. माँ, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हो. सॉरी, आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी हो. आप ही साक्षात श्री गणेश हो. कृपा करके हमें संतुलन की स्थिति प्रदान कर दीजिए. मदर, प्लीज स्टैब्लिश अस इन प्रेजेंट स्टेट. माँ, हमें वर्तमान की स्थिति में स्थापित कर दीजिए. नाउ लेट्स पुट अवर अटेंशन टू सहस्रार. सहस्रार पर चित्त को लाते हैं. यहाँ माँ से प्रार्थना करते हैं. परम पूज्य श्री माता जी,
आप ही आदिशक्ति भगवती भवानी माता हो, कृपा करके आप हमें योग की अवस्था दे दीजिए। नाउ लेट्स प्रे टू मदर। मदर, यू आर श्री आदिशक्ति भगवती भवानी, प्लीज ग्रांट अस द स्टेटस ऑफ योगा। मदर, प्लीज establish our self realization। माँ, कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। लेट्स डू साइलेंट मेडिटेशन फॉर कपल ऑफ मिनट्स। निर्विचारिता में ध्यान करते हैं कुछ क्षण। नाउ लेट्स लिसन टू श्री माता जी अमृतवाणी इन दिस स्टेट। हम श्री माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे इस स्थिति में। Please let me know if my screen audio is hearable or not. We have gathered here to do Sri Shiv Puja. Okay. Those people who have a clean heart can only do Shiv Puja. Those whose heart is not clean cannot do Shiv Puja. It's a simple principle of Sri Shivratri. As you had seen yesterday, we have snakes, or these are horrible snakes. Guiding behind the Shivalinga. The significance is this. See, those who are clean in heart, who are full of love for others, are always guarded by the power of Shiva, which are the snakes. It's a symbolic thing to say, very symbolic. But I must say that animals understand divine force much better than human beings, much better. They have a clean heart. Whatever is there,
Sorry, there is some internet issue, I think. No issues. We are in good state. Divyank, we can continue. That style built by nature. Yeah, there is They some carry on internet with issue, I think. Am I audible? You are audible. it. But there's no malice, there's no jealousy, there's no all these mean things in their heart. They do it because it is supposed to. But the quality of human beings is only one, and that is how much they love and forgive. Loving capacity of human beings are such by which they conquer all their negative forces. They can easily see that it's not good to have all these qualities, or maybe that they understand it's not noble to indulge into all these inhuman behavior. They are not bound to indulge into all these things. Neither they are asked to, but suddenly they get lured by such things which has got hatred, jealousy, and greed. You see how Shiva lives. He lives in the Himalayas. See what clothes he wears, what he eats. He has no demand for anything because he's complete, he's perfect. Such a personality is Shiva's. And if you are worshipping him, you should find out within your heart what sort of feelings you have, what sort of malice you nurture. These days in India, greed has become the main point. They are so mean and so low. It's impossible to understand that they think money is everything, which is not in the culture of Indians. No, no, in no way. But somehow they have picked it up in the foreign countries perhaps, and it is spreading very much now that money is the most important. Think of Shiva. He never thought of money. He never wanted any money. He never wanted to show off himself. There's such a difference between Shiva and Shakti in their whole attitude. Because Shiva is absolutely a liberated personality. He is not bothered. If the people are indulging into wrong things, he'll destroy. Finished. He doesn't want to cure, he doesn't want to improve, nothing of that. But for the Shakti, it is important. Because this is her child, this universe is her child. All this is created by her. So naturally, she's worried. And she doesn't like people who try to take to mean things and nonsense. First of all, it was human beings started indulging in power.
They moved from countries to country to empower themselves. Where is that power gone? Finished. Then, after that, what happened with them is that they left their style with others. And now it seems that's very common to see people shamelessly being greedy. For them, is the solution is Shiva. All such people will be destroyed. First of all, they'll be exposed, and then they will be destroyed to the last bit of it. Another thing is that Shiva respects a person who has a good character. Person with a good character. And if anyone is bad charactered or indulges into bad things, Shiva won't spare them. So the Shakti creates, protects, looks after them, brings them up. But Shiva is sitting there just to destroy. Very important. This destruction is very important. The Shakti doesn't show those qualities. She may destroy some Rakshasas, but he can destroy nations after nations. First of all, the ego you have, who will destroy that? That too, Shiva. Shiva is in your Sahasrara. He's sitting in the Sahasrara. Now remember, on top of everything. The other day, I saw one gentleman from the broadcasting newsman. He was very, very stupid and was talking very harshly. And I saw his Ekadash coming up. My God, I said, this one is now going to be in trouble. What is Ekadasha is nothing but the 11 powers of Shiva. जय श्री माता जी। आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सो बिफोर वी बिगिन, शुरू होने से पहले मैं आज के स्पेशल गेस्ट का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। Before we begin, I would like to introduce our special guest by giving us short description and introduction about her. So today we have a special guest named Pritti Didi. Pardon me if if I'm announcing her name wrongly. She has lived and worked across the world from Dharamshala to China, Germany. Currently, she is in Italy, Milan, making a mark in global sports industry. And currently, she is a facilitator, helping teams turn ideas into action. But beyond her professional journey, she has a deep connection with Sahaj Yoga and has even had the blessing of meeting Sri Mataji in person. We are excited to hear more about her experience. So let's give a warm welcome to Preeti Didi. She is also a daughter of Jeremy uncle, who we interviewed earlier. So I'm just going to translate this in Hindi for other users. So आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं, प्रीति लमेजोन दीदी। इन्होंने धर्मशाला से लेकर चीन, जर्मनी और अभी इटली में है, मिलान तक दुनिया भर में काम किया है। खेल जगत में और टीम वर्क को नई दिशा दी है। लेकिन काम के अलावा उनका सहयोग से उनकी गहराई काफी सहयोग से उनका जुड़ाव काफी गहरा रहा है। उन्हें श्री माता जी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो आज हम उनके अनुभव के बारे में जानने के लिए उत्साहित हैं। तो आइए हम सब मिलकर उनका स्वागत करते हैं। और प्रीति दीदी, जेरेमी अंकल जिनका हमने पहले इंटरव्यू लिया था, उनकी बेटी हैं। सो प्रीति दीदी, वेलकम। जय श्री माता जी।
from Yuvashakti Uttarakhand group. Yuvashakti, thank you so much for the invitation. I feel really special and very happy to be here. Thank you. We do. We all are. Pritti, thanks. So, Pritti, I will just start by asking some questions, and then before you start answering, I am just going to translate it for other people. But I am going to ask you. Okay. So, in today's session, I'll be asking Preeti some question about her life, her journey in Sahaj Yoga, and her professional experiences. We hope her insight will inspire us all. So, let's begin our conversation. So, आज के इस सत्र में हम प्रीति दीदी के जीवन के बारे में, उनके सहज योग के अनुभव के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और हम सब आशा करते हैं कि उनके अनुभव से हम सभी को प्रेरणा मिलेगी और हम बात शुरुआत करते हैं. So my first question to you, Preeti Didi, is basically, could you introduce yourself and share a bit about your background, where you grew up, and since how long you have been practicing Sahaj Yoga? So मेरा क्वेश्चन प्रीति दीदी से मैंने ये पूछा है कि प्रीति दीदी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं हमें और आप कहाँ से हैं, आपकी कहाँ से शुरुआत हुई, आप बचपन आपका कहाँ बीता. तो मैं प्रीति दीदी का एक इंट्रोडक्शन मांग रहा हूँ. ओवर टू यू प्रीति दीदी. Thank you. So, my parents, I don't know if my father told already, but my parents were matched by Shimataji. They were one of the first couples in Sahaja Yoga, and they married in 1984. I was born at the end of 1984, already doing my meditations in the belly, let's say. And then since I was born, my parents with other couples from France and Germany and Switzerland were all living in an ashram in Rome. So I started my life with other families and their babies in Rome. And then when we grew up at the age of 5, we were sent to India, to Dharamsala all together. So then I was in Dharamsala from 5 to 10 age. And then at the age of 10, I returned to Milan and stayed in Italy until I finished university. And then I moved to China and then Germany and then back to Italy. So I've always been meditating in Sahaja Yoga since I was born. And I was very lucky to be very close to Shimataji because she gave me my name. And she was always very interested in what I was doing, if I was okay, what happened. It was a very close relationship. Yeah. Yeah, I'm just going to translate it. Sorry, So, I forgot Preeti about Didi, that. You can interrupt me. It's no problem. No worries, no worries. I'll try my best to translate it. So, No. मैं प्रीति दीदी का कहना है कि 1984 में उनके जो फादर, जो जेरेमी अंकल जिनसे हम मिले थे, उनकी शादी हुई थी और वो काफी अर्ली, बहुत शुरुआत में कपल्स थे जिन्होंने श्री माता जी के सहयोग के उस समय पे शादी करी थी. प्रीति दीदी का 1985 में बर्थ हुआ और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो रोम में, इटली में उनका 5 साल तक अपने दोस्तों के साथ वो रही रोम में, उनका सारा बचपना बीता. उसके बाद वो धर्मशाला में आ गई, धर्मशाला इंडिया में वो लोग आ गए. 5 से लेकर 10 साल तक वो धर्मशाला में उनका पढ़ाई हुई, बचपना बीता. उसके बाद फिर वो वापस इटली में आ गए, रोम में आ गए. और उसके बाद रोम में आने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी फिर पूरी लाइफ अलग ही रही. उन्होंने काफी प्लेसेस घूमी, जैसे जर्मनी, चाइना, अलग अलग प्लेसेस. अभी वापस वो इटली में हैं. और उसके अलावा उन्होंने कहा कि वो काफी लकी रही हैं, उनका नाम श्री माता जी ने ही दिया है और काफी लकी रही हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, क्योंकि श्री माता जी ने उन्हें चुना था. सो या दिस इज ये पहले क्वेश्चन का आंसर था. नाउ प्रीति जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू माय सेकंड क्वेश्चन. So Yes. we have seen a photo of you with Sri Mataji, and we Yeah. know you had the blessing of meeting her in person. Could you share what it was like to be in her presence, and any special moments or memories that you cherish from those times? So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति से यह है कि अभी जो हमारे ग्रुप में हमने फोटो देखी थी जिसमें श्री माता जी के साथ प्रीति दीदी थी, तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने आपकी तस्वीर देखी है और हमें पता है कि आपको
उनसे मिलने, श्री माता जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो क्या आप हमें बता सकती हैं उनके, श्री माता जी के साथ रहना कैसा, मतलब कैसा अनुभव था आपका उनके साथ रहने का? और कोई भी आपका कोई स्पेशल मोमेंट्स रहा हो या कोई ऐसी मेमोरी हो जिसे आप याद रखती हो, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। और अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि मुझे थोड़ा तेज बोलने की आदत हो गई है। सो मुझे बता देना, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा। या प्रीति दीदी, ओवर टू यू। Yeah, so there are very many special moments. I'll divide the question into two. So I'll take the first part, which is how was it to grow up with Shimataji? It was actually very normal to have someone. It was very normal to be by her side. It was very normal. We always wanted to, as the little kids around her, she knew everything about us, and she was always very interested. And she wanted to know everything that we were doing, what were our interests, and so on. So for us, we did recognize who she was, but we also had a very spontaneous relationship. There was no fear. There was no like extreme protocol. It was just being with her all the time. So and then I will answer the second part, so you can translate if you want. No, no, you can do it. You can answer Okay. it. I will try Yeah. to give more Okay. advice. So the second part is also special moments. There were many special moments. She really wanted me to be a dancer, an Indian Kuchipuri and Bharatanatyam dancer, and I was performing on the stage a very young, very small kid, and she always used to compliment me a lot, and she used to always fix my costume before while I was on stage if it was a bit like this, and remind me to smile because I never remembered to smile when I was dancing. And then also in growing up, when I was back in Italy, I made a tiramisu for her. It's an Italian typical sweet. I don't know if you have tiramisu in India, but I brought it to her, and because mother could not eat sweets at all, like no sugar at all, and but she did taste a little bit of the tiramisu, and I was so offended. I was like, how is it possible you don't eat my tiramisu? And so, but I was very small. I was like, yeah, 12, something like this, and then and then to calm me, she was like, no, don't worry. And then she gave me this beautiful doll. Yes, she used to give us so many gifts all the time. Growing up, I have so many gifts from her. Every time we saw her was meant a gift. And then one of my last memories when I was 19, it was Raksha Bandhan, and for some reason, it was supposed to be me and another person, another girl, doing Raksha Bandhan ceremony to mother. We made this beautiful bracelet. Well, actually, I didn't make it. My friend made it, but we were supposed to give it. And then for some reason, it was only me doing it. So then I entered the room, and suddenly I'm so aware of like protocol and what should I do? How should I do it? And I was like really thinking a lot. And Shimataji's like, don't worry. She took the plate from me, the tray, and she said, okay, do your thing. And because I didn't want to put the tray on the floor, I thought it was disrespectful. And so she was like, don't worry. She took the plate, and then she started telling me that I was thinking too much and to eat more sugar. And she was always very kind. I mean, extremely loving, extremely loving. So for me, it was like having it's not, I cannot say mother, it's more than that. It's very difficult to describe because we had full understanding of who she was, but we were also very lucky to be with her so close, and we knew that we were very, very conscious, and many times she has asked all of us together to go, and she used to give us a big papach, a big telling her, why are you behaving like this? You should do better. And so it was, she knew us deeply, each and every one of us, but she encouraged us always to be the best version of ourselves. Yeah. Great. Sorry, that was a So lot.
Yeah, no worries. सो ओके सो दीदी ने बताया कि जब श्रीमती के साथ जब भी वो रहे थे, पूरा टाइम जितना भी स्पेंड किया, दीदी का कहना है कि वो काफी नॉर्मल था। मतलब शी न्यू, वो जानती थी कि वो श्रीमाता जी कौन है, बट उनके साथ रहना बिल्कुल नॉर्मल लगता था, मतलब नॉर्मल लेडी की तरह। ठीक है, पहली चीज दीदी ने बताई, उन्होंने बताया वो हमेशा, हम दीदी ने बताया कि जो भी फ्रेंड लोग थे वो हम सबके सब बच्चे माँ के साथ हमेशा रहना चाहते थे। और श्री माता जी हमारे बारे में हमेशा पूछते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या हैबिट्स हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं आजकल, हम कैसा कर रहे हैं। श्री माता जी बच्चों के बारे में हमेशा पूछते रहती थी। दीदी ने ये भी कहा कि श्री माता जी को हम पहचानते थे कि श्री माता जी कौन है, और उसकी वजह से हमें कोई डर भी नहीं लगता था। हमारे पास कोई भी बिल्कुल भी डर नहीं था, हमेशा ऐसा लगता था हम श्री माता जी के प्रोटेक्शन में हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे स्पेशल मोमेंट्स उनकी लाइफ में रहे हैं। एक मोमेंट जो उन्होंने बताया कि वो इंडिया में एक बार एक भोजपुरी कोई भरतनाट्यम डांसर डांस कर रही थी, तो वहां पे श्री माता जी के सामने परफॉर्म कर रही थी, तो श्री माता जी उन्हें उनको कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ कर रही थी, और उनकी ड्रेस को वो श्री माता जी एडजस्ट करती थी। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने श्री माता जी के लिए एक बार एक इटालियन स्वीट बनाई थी, और श्री माता जी के लिए वो लेके आई, तो श्री माता जी ने उसे थोड़ा सा खाया। तो दीदी ने बोला कि मुझे काफी गुस्सा आया, मुझे अजीब सा लगा कि मैंने इतने प्यार से माँ के लिए स्वीट डिश बनाई और माँ ने उसे बिल्कुल थोड़ा सा चखा है। और ये एक और मोमेंट था। उसके बाद दीदी ने ये भी बोला कि श्री माता जी हमें बहुत सारे गिफ्ट्स देती थी। कह रही, उन्होंने बताया कि उनकी श्री माता के साथ उनकी जो लास्ट मेमोरी थी, जो लास्ट याद थी, वो ये थी कि दीदी तब 19 साल की थी, और वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे। तो जब वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते समय, जब वो रक्षा जो बांध रही थी, रक्षाबंधन जो राखी होती है, जब वो बांध रही थी, तो तब दीदी को लग रहा था कि उन्हें प्लेट, जो हमारी प्लेट होती है, उसे नीचे नहीं रखना चाहिए। तब दीदी को बहुत ज्यादा फील हो रहा था कि मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, कि मुझे प्लेट नीचे नहीं रखनी है, मुझे सब कुछ अच्छे से करना है। तब श्री माता जी उनके पास आए और श्री माता जी ने उन्हें बताया कि आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं लो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री माता जी ने बहुत उन्हें प्यार से समझाया। तो मोर एंड मोर दीदी ने ये कहा कि श्री माता जी माँ से भी बढ़कर थी हमारे लिए, और उन्हें समझाना बहुत डिफिकल्ट है, समझा पाना। हमें पता था कि श्री माता जी कौन है, और श्री माता जी के साथ रह पाना ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और श्री माता जी उन्हें हमेशा करेज देती थी, साहस देती थी हर चीज के लिए। तो ये दीदी का पूरा डिस्क्राइब है श्री माता जी के बारे में। नाउ अब मैं अपना तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। नाउ दीदी, आई विल आस्क यू माय थर्ड क्वेश्चन। सो योर फर्स्ट एवर वर्कशॉप टुक प्लेस इन कबेला at the Mm. castle meditation room, where you help parent design a project for Sahaj teenagers. Now, can you share more about that experience and what was the project about? How did you feel to facilitate your first workshop in such a special place? So, मेरा अगला क्वेश्चन दीदी से ये है कि दीदी ने अपना पहला वर्कशॉप कबीला के मेडिटेशन रूम में किया था, जिसमें उन्होंने सहज योगियों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए माता पिता की, पेरेंट्स की मदद करी थी। तो अब मैं दीदी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं हमें कि क्या प्रोजेक्ट था, और उससे आपको उस चीज को, मतलब उस पूरे प्रोजेक्ट को कंडक्ट करके कैसा फील हुआ। या ओवर टू यू दीदी। So, all of my life, I feel like Shimataji was always beside me. I have so many little miracles in my life that happened and always tell me that Mother is always by my side and guiding me, especially guiding me. But in this case, I felt like it was incredible because I left my job in Germany. I came back to Italy and I started this facilitation process, and I was a bit unsure. But then, for some reason, um, they asked me to help the parents in some way. So I volunteered to create a workshop for them to kind of help the communication between the parents and the organization of like the Kabbalah school and other projects that were going on. And for some reason, it ended up the only place available for us to do this was the castle. And so it was incredible how it was all guided for us to be in that place in that moment. And what we did was there was the idea of creating a follow-up school, because there is Kabbalah school, but Kabbalah school is only up to
I think 10 years old, no, 10, 12. And then they wanted to do a continuous, like the second part of the school, and they were thinking how to do it and so on. And but in the end, it was not about that so much, because what came out of the workshop was the frustration of the parents and how their difficulties of raising children in Saj Yoga, because they didn't know how to face certain things. And then, some difficulties on how to approach different types of, Sahaj dharmic ways with the kids. And in the end, it came up, and like at the beginning, everybody was so tense and so nervous, but by the end, everybody was like, hugging each other and thanking each other, and they had, such beautiful experience, and the parents became one, and also the organizing committee of this from the school also got much more united. So what we built a kind of bridge together, and it was really powerful and beautiful. I felt extremely blessed. Yeah. And I felt like an instrument. I felt like, not really, I was put there in that moment, and even what I was doing was not, I was not even saying. I was just like completely, like a flute. It was just, I was just doing what I was supposed to do, but not from me. It was just coming through me. That's what I felt. Yeah. So I'll translate this. So yeah, so दीदी ने बोला है कि पूरे उनकी लाइफ में उन्हें हमेशा से ये फील होता है कि श्री माता जी उनके साथ हमेशा है, हर समय है, और हमेशा उन्हें गाइड करते रहती हैं। बट जब वो अपनी जॉब छोड़ के वापस इटली आई, और जब उन्होंने फैसिलिटेशन की, जब ये वर्कशॉप की, जब ये जॉब स्टार्ट करी, तो तब उन्हें मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं था। वो शी बहुत मतलब उन्हें कॉन्फिडेंस सा नहीं था अपने में। तो अब उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, तो उसमें सहज योगी पेरेंट्स ने दीदी से बोला कि हमारी एक वर्कशॉप ऐसी आप बनाइए जिसमें हम बच्चों की प्रॉब्लम्स और जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर सकें। तो जब ये वर्कशॉप जहाँ पे होनी थी, वो उसके लिए जो जगह मिली, वो कबेला का मेडिटेशन वाला स्थान मिला दीदी लोग को। तो ये दीदी ने बोला कि एक हमारा सौभाग्य था। और उस पूरे वर्कशॉप के दौरान दीदी को ये पता चला कि पेरेंट्स जो थे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे कैसे अपने बच्चों को मेडिटेशन में कैसे कराएं, सहयोग के बारे में कैसे बताएं। तो इस पूरी वर्कशॉप में दीदी लोगों ने इन सब चीजों पे काम किया, और लास्ट में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट से काफी सारे सब लोग काफी खुश थे। सब लोग को नई नई टेक्निक्स मिली कि कैसे करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सब लोग एक दूसरे को हक कर रहे थे, ये दीदी ने बताया। दीदी ने आपसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट बात बोली वो ये बोला कि अ, मुझे इस उस पूरे वर्कशॉप के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं परमात्मा की इंस्ट्रूमेंट बन गई हूँ, मैं परमात्मा की यंत्र बन गई हूँ। उन्होंने बोला कि मैं कुछ कह भी नहीं रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ श्री माता जी ही करा रही हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो ये दीदी ने अपने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। या सो दीदी, आई विल लाइक टू आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। You have traveled and worked in different parts of the world, from Dhaka to Germany, England. Has Sahaj Yoga connected and balance despite such a busy and dynamic life? I'm just going to translate it. आप दुनिया के कई हिस्सों में काम किया है, धर्मशाला से लेकर मनी, और अभी आप मिलान में हैं। इतनी व्यस्त और गतिशील जीवन शैली में भी सहज योग ने आपको कैसे संतुलित और जुड़े रहने में मदद की? Yeah, what do you do? Sorry, can you please repeat the question? I think I didn't hear everything. So Divyansh, your voice is breaking up in between. You may have to repeat it. Sure. I'm going to repeat it. Yeah. Yes. Yeah. So my question was that you have traveled and worked in different parts of the world, from Dharamshala to China to Germany and now in Milan. How has Sahaj Yoga helped you stay connected and balance despite such a busy and dynamic life? I think Saj Yoga is one of the beautiful gifts that, among all the other gifts, one of the gifts of Saj Yoga is that you have a family worldwide, not only in the place where you live, but you have a family worldwide. So I always try to reach out to the local meditation center or to the local Sahaj yogis to
try and be part of that collective and try to see where I can be helpful, and also to be in the collective. I think being in the collective is one of the most important parts, because it really helps you. First of all, for me, in that moment, it's like to get familiarity with the place, but also it always for me felt like I have my uncles and aunties everywhere. So even if I don't know them yet, I know I have uncles and aunties, even among you guys. So it's just a matter of me being there to know each other. So my approach is always family oriented. I never have a barrier, and I always want to be with Saj Yogis, and try to understand. How can I learn? How can I improve from that experience, and so on. And uh, yeah, I can't say it always worked. Sometimes, there are challenging moments. But I never had big issues. Like I always found welcoming people, and I always created that relationship with the local yogis to be part of what they were doing. Yeah. सो दीदी ने बताया कि सबसे पहले दीदी ने बताया कि सहज योग एक सबसे सुंदर गिफ्ट है, बहुत ही सुंदर गिफ्ट माँ ने हमें दिया है। और इस पूरे सहयोग का एक खास गिफ्ट जो है माँ ने हमें बताया, जो हमें माँ ने दिया है, वो ये है कि हमारी एक फैमिली है। और फैमिली ये नहीं कि सिर्फ जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ उस जगह पे नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारी फैमिली है, ये दीदी ने बताया। तो दीदी ने बताया कि जब भी मैं दूसरी कंट्री जगह जगह पे जाती थी तो मैं हमेशा लोकल सहयोगी के को रीच आउट, मतलब उनके पास उनसे बात करती थी, उनके साथ कनेक्ट रहती थी। दीदी का पूरा गोल ये रहता था कि जितना हो सके कलेक्टिविटी में रहे। तो वो दीदी को बहुत हेल्प करता था। और दीदी ने ये भी बोला कि दीदी किसी भी कंट्री में जाती थी, कोई भी नई प्लेस में जाती थी, उन्हें हमेशा ऐसा फील लगता था कि उनके अंकल आंटी, उनके कोई ना कोई रिश्तेदार वहां पे है। चाहे वो उनसे कभी वो मिली भी नहीं हो, कभी उन्होंने बात भी नहीं करी हो, बट उन्हें हमेशा ये फील होता था। तो उन्होंने ये बोला कि वो कहीं भी वो ऑलवेज जब भी नई जगह पे जाती थी, वो हमेशा सहयोगियों से मिलना चाहती थी। वो कहीं भी ऐसे नहीं हम बैरियर रखना चाहते थे कि ये तो दूसरी कंट्री के सहयोगी हैं, मैं इनसे कैसे बात करूं। तो उन्होंने ये भी बोला कि वो हमेशा सबसे बात करना चाहती थी, और नई नई उनका कल्चर, उनके बारे में सीखना चाहती थी। उन्होंने ये भी बोला लास्ट में कि कभी कभी चैलेंजेस होते थे, बट कभी भी कोई माँ की कृपा से कोई भी ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं हुआ, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आई जिनकी वजह से उन्हें ऐसा कभी फील हुआ हो। तो उन्होंने ये बोला लास्ट में कि अब सभी सहयोगियों के साथ रिलेशनशिप बनाना दूसरी जगह जाके भी यही उन्हें हेल्प करता था। या दीदी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या we often hear that collectivity is the backbone of Saj Yoga. How has collectivity helped you in your spiritual and professional journey? Why do you think it is important for Yuvashakti to stay connected to collectivity? हम अक्सर सुनते हैं कि सामूहिकता सहयोग की रीढ़ है। आपकी आध्यात्मिक और व्यवसायिक यात्रा में सामूहिकता ने आपको कैसे मदद की, और युवा शक्ति के लिए सामूहिकता से जुड़े रहना क्यों महत्वपूर्ण है? ओवर टू यू। There's so many answers possible for this question. I will start with just a few that come to mind. The first is collectivity, for my understanding, is like a mirror. It really reflects, what the beauty, but also the things that you can work on yourself. It really never take it personally, always take it in like, okay, this is happening to me, or this person is reacting, or like this or like that. But it's something that you need to figure out within yourself. And it is a perfect way to evolve and to become a better Sahaja. There's no other way. You need the other person to reflect. You need the other person to give you advice. You need the other person to help as well, because you at the same time can also do the same for someone else. It is absolutely necessary, because we should
shift from the idea of being one individually, because actually we're not. We are, when we surrender that ego and a super ego, and when we manage to become one among the whole collective, that's when we can really truly tap into our, let's say, superpowers, right? That's when we really evolve as human beings, and that's when we can really use our powers. It's um it is something so powerful, to be connected all together. And there's so much love from the collective, and there is so much willing to grow together and to face everything together, and to learn at the same time. And of course, there will always be challenges, but the final goal is to stop really fixating on the little things and together work on the bigger issues in the world. What are the main things that we can do together? How can we use Saj Yoga to make this the heaven on earth that Mother says? We are so special. We are incredibly special. Imagine, in all the time in the world that the world has lived, us as human beings also in our lifetime, we are born now in this moment, and we are alive now. And in the past, realized souls were maybe one or two in the world, right? And they were not understood by anybody. But we are so lucky that we have the possibility to have so many people that recognize Shimataji and do namaskar to Shimataji. I mean, how lucky are we? It's incredibly, it's so blessed. And to have that, it's really like having a family, a brother and sister. We have worked so hard all our lives to be here in this moment together, to really accomplish Shimataji's dream, to really accomplish the vision, and to make this world what it should be. And collectivity is extremely important because it brings a much higher and deeper level of your evolution to yourself. And it's only in collectivity that you can grow. I mean, the message of Shimataji often is meditate and be in the collective. These are the two main things that she says of being a Satyayogi. And it's very clear how, because if you don't meditate, you cannot grow. And if you're not in the collective, you cannot grow. There is no other way. I mean, and I think also biologically, we can explain it because we really need to act to love. It's not something that works automatically inside us, like breathing or heart beating and so on. But we need to really act on love. We need to make a decision to love. And the best way we can express that is in collectivity. Yeah. दीदी फॉर दिस सो या तो दीदी ने बोला है कि कलेक्टिविटी उनकी समझ से, जो दीदी का मानना है, वो कलेक्टिविटी एक शीशे की तरह है। शीशा क्या करता है? शीशा हमें हमारी, जब हम शीशे में देखते हैं, हमें हमारी ब्यूटी तो दिखाता है, बट हमें वो एरियाज या वो चीजें भी दिखाता है जो हमें बताती हैं कि हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए। तो दीदी कहती हैं कि कलेक्टिविटी शीशे की तरह है, जो आपको आपके अच्छा पार्ट भी दिखाएगा, बट आपको वो पार्ट भी दिखाएगा जहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। आपको कलेक्टिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको अदर पर्सन, आपको अदर सहयोगी की मदद चाहिए, आपको दूसरे सहयोगी की एडवाइस भी चाहिए, और आपको खुद भी दूसरे सहयोगी की मदद करनी है, एडवाइस करनी है। तो कलेक्टिविटी में हम ग्रो करते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि हमें दिमाग से ये आइडिया निकाल देना चाहिए कि हम अकेले हैं। हम अकेले नहीं हैं, हम सबके सब कलेक्टिव बीइंग हैं। उन्होंने ये भी बोला कि जब हम सरेंडर करते हैं अपने अहंकार और प्रति अहंकार को, तब हम ह्यूमन से, नॉर्मल इंसान से सुपर ह्यूमन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने यही बोला कि जब हम सबके साथ कनेक्टेड रहते हैं, कलेक्टिविटी में रहते हैं, तो ये बहुत पावरफुल चीज होती है। इसमें आप बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है आपको।
एंड हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए कि हमें छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मिलके दुनिया के जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में हम सोचें, उन सबको सोचें कि हम कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं दुनिया की प्रॉब्लम्स को। और उन्होंने ये बोला है कि हम कितने लकी हैं, हमें होना चाहिए, क्योंकि पूरे समय में जब से समय की स्टार्टिंग हुई है इस दुनिया की, जब से ब्रह्मांड बना है तब से इस समय पे जब ये सहजयोग सब माँ ने सहजयोग ला के दिया तब हम पैदा हुए हैं। हम कितने लकी हैं। उन्होंने ये बोला कि पुराने जमाने में सिर्फ दो तीन लोग ही रियलाइज लोग होते थे। आज हम देखो हम कितने सारे लोग हैं। तो हम कितने लकी हैं, हमें ये भी लकी भी फील करना चाहिए। और जब हम कलेक्टिव में होते हैं तो श्री माता जी ने ये भी कहा है कि जब आप ध्यान करते हो और जब आप कलेक्टिविटी में भी जाते हो तभी आप ग्रो करते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम घर पे ध्यान करते रहेंगे, ऐसा नहीं, हमें कलेक्टिविटी में भी आना चाहिए। सो ये दीदी का आंसर था, काफी सुंदर आंसर। या दीदी, और माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट्स बेसिकली रिलेटेड टू बैलेंसिंग सहज योगा। सो यू हैव वर्कड विद हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज लाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड large scale events like Olympics and Ironman. How did you manage to make time for meditation and Sahaj Yoga while handling such responsibility? तो मेरा दीदी से अगला क्वेश्चन यही है कि दीदी ने इतने कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों में काम किया है, और बेसिकली दीदी से हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना उनका शेड्यूल इतना डिफिकल्ट होता था, इतना सारा काम होने के बावजूद भी वो कैसे करके टाइम निकालती थी मेडिटेशन के लिए और सहज योग के लिए। ओवर टू यू। This is a very strange question because time is not not a real concept, you know. If Saj Yoga is your priority, it depends. Like if you want to grow spiritually, Saj Yoga is your priority no matter what you're doing. Um, you can always find 5 minutes in the morning and in the evening. Sometimes you need more, sometimes you need less, but it's very important, the consistency. It's much more important to be consistent, to be like maybe 5 minutes, but every day. Of course, sometimes maybe not possible, but then maybe 1 hour today and 1 hour next month. That doesn't make much sense because your Kundalini needs to grow, and the more you meditate, the more consistent you are, the more strands of Kundalini. You know, we have 108 strands of Kundalini that need to reach our sastra. So what I also like and I see is I'm always having this experiment mentality in me. So sometimes I like to track, you know, how my moods are going, how many like little miracles are happening in my life, and how is it going if I meditate, if I don't meditate, or if I try this or if I try that, you know. So I also have kind of fun with it. I always like to test and see, you know, how far does it go? How much am I growing? How can I reach this? What can I do there? And yeah, this concept of time for me doesn't make sense because your time can be dilated and can be restricted. It's just your desire. I think that needs to be there always. So it's through your desire that you act, and it shouldn't be, of course, like a ritual, because that doesn't make any sense as well. It shouldn't be something that you force yourself. It's something that should be extremely spontaneous. And when you don't know what to do and you just sit there and ask for the Kundalini to do everything and ask for Shrimataji to do everything, because everything happens anyway. The important thing is that you allow yourself and you put yourself in the place for it to happen. So, and you can only do that by meditation. So, दीदी ने बोला कि दीदी मानती है कि टाइम कोई एक रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, टाइम कोई हकीकत चीज नहीं है। उन्होंने बोला कि अगर आपकी सहजयोग एक प्रायोरिटी है तो आप कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, आप हमेशा सहजयोग के लिए टाइम निकाल लोगे, चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना निकाल लो सुबह शाम, उससे मतलब नहीं है। और उन्होंने ये बोला कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि हम कंसिस्टेंट रहें। हम चाहे रोज 5 मिनट ही ध्यान क्यों ना करें, लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज ही ध्यान करें। उन्होंने बोला कि कभी कभी वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी ट्राई करती हैं, तो वो
उन्होंने बोला कि कभी कभी वो ध्यान करती हैं, और जब वो ध्यान नहीं कर रही होती हैं कभी कभी उनके शेड्यूल की वजह से, तो वो चेक करती हैं कि उनका आज अच्छा, अगर आज मेरा ध्यान नहीं हुआ तो मेरा मूड कैसा है आज। तो उन्होंने ये बताया कभी कभी वो अलग अलग मेडिटेशन मेथड से अलग अलग चीजें ट्राई करती हैं। तो वो कह रही हैं कि उनके लिए सहज योग एक बहुत सीरियसली नहीं लेती हूँ मैं, इसे मैं थोड़ा खेल की तरह लेती हूँ। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि अल्टीमेटली ये आपकी इच्छा शक्ति पे ही है। इच्छा शक्ति अगर आपकी अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद ध्यान करोगे, आप खुद ब खुद मेडिटेशन करोगे। आप इसे कर्म कांड की तरह नहीं कर सकते हो, आप इसे अपने आप को फोर्स करके नहीं कर सकते हो, आपको खुद से ही आना चाहिए, ये दीदी ने बोला है। और अगर आप खुद से ही, आपकी शुद्ध इच्छा शक्ति होगी, तो ये ध्यान आपका खुद ब खुद हो जाएगा। ये दीदी का आंसर है। There are a lot many questions. I'm just going to ask one or two more. Then after that, I will ask other people to ask them as well. So one question related to for our guidance for Yuvashakti. So you have led projects that bring people together for big decisions and teamwork. How can Yuvashakti prepare themselves to become future leaders in Sahaj and professional work? That's a very nice आई एम question. जस्ट गोइंग टू ट्रांसलेट दैट। सो Mm. आपने, हमने मेरा दीदी से पूछा है कि दीदी आपने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया है जहाँ पे आपने टीम्स को लीड किया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दीदी युवा शक्ति अपने आप को कैसे करके हम तैयारी करें कि हम फ्यूचर में लीडर बन सकें सहज में, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी हम लीडर्स बन सकें। क्या दीदी, ओवर टू यू। I think this is for everyone, not only Yuvashakti, but it depends on, of course, what they want from themselves and what they want in their lives. But also, I can understand sometimes people don't know, their role in Sahaja Yoga. They have not found themselves. Um, they don't know what to do, what the path, they don't understand. And my suggestion is just try everything. Try one thing with one uncle, one thing with another uncle, and see what your path is and find your place in Sahaja Yoga. So I think the first thing would be find your place, and then from there just explore. Remember that you are chosen. You have a divine spirit. You are enlightened. So whatever you do, it will be amazing. So just see also what is your natural tendency, where can you shine, what qualities you want to develop, and follow it. And my suggestion would be to be part of the collective and to find some mentors, find some people that give you the answers, that help you and give you the guidance to find your path and to find your way. You are unique in every way and you're special and you have amazing, beautiful powers. Just find a way to express them and and believe in yourself. It always starts from there. And Sahaja Yoga can help a lot with all of that. It can give you confidence, it can develop all your qualities, and it can help you become the best version of yourself even more. Because once we are like, yeah, like drops in the ocean, I always want to highlight this. It's not about our ego, it's about who we really are. And when we manage to dissolve in the ocean, we become the ocean. I mean, how much more beauty can there be from a drop to the ocean? It's like a jump, right? So I would always ask yourself, what do you want from Sahaja Yoga and what can you give to Sahaja Yoga, and find that balance of developing your spirit and your evolutionary path. Yeah. तो दीदी ने बताया कि ये जो जो आंसर दीदी कर रही थी, ये सिर्फ युवा शक्ति के लिए नहीं, सबके लिए है। कि आपको ट्राई करना चाहिए सब कुछ, आप ट्राई करके देखिए कि आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है। आप और ज्यादा उस चीज में रिसर्च करिए, उस चीज को खोजिए, आप खोजते रहिए, ठीक है। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम सबके सब जो लोग हैं, हम परमात्मा ने हमें चूज किया है, मतलब परमात्मा ने हमें चुना है, ठीक है। हम लोग आत्म साक्षात्कारी लोग हैं। तो हम जो भी करेंगे हम बहुत अच्छे से करेंगे। और आपको अपने आप में ढूंढना पड़ेगा कि हम किस टाइप की क्वालिटी बनाना चाहते हैं। आपको एक और चीज ने टिप दी कि आप कलेक्टिविटी में जितना जुड़ सकते हो जुड़े रहें, और मेंटर्स ढूंढें। कलेक्टिविटी में भी कलेक्टिव हो गए, मेंटर्स ढूंढें जो आपको गाइड कर सकते हैं।
किसी भी चीज में, ठीक है। उसके अलावा दीदी ने एक दो वर्ड और बताया कि हम सबके सब अपने आप में अलग हैं, हम सबके यूनिक हैं, हमारे पास बहुत सुंदर शक्तियां माने दी हैं। तो हमें हम सब अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, और सहयोग हमें हेल्प करेगा, हमें वो इंसान बनने में, ठीक है। और लास्ट चीज दीदी ने कही कि हम एक छोटी सी बूंद हैं। तो एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम एक छोटी सी बूंद को जब आप ओशन में, समुद्र में मिला देते हैं, तो वो खुद समुद्र बन जाती है। तो हमें माँ ने वैसे ही बना दिया है। और अपने आप से, लास्ट में दीदी ने बोला कि अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि हमें सहयोग से क्या चाहिए, और हम सहयोग को क्या दे सकते हैं, और हमें उसका बैलेंस तोड़ना चाहिए। ये दीदी का वर्ड। दीदी, जस्ट माय लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल जस्ट लीव इट फॉर एवरीवन टू आस्क। सो बेसिकली, if there is one message you would like to give to all Yuva Shaktis around the world, what would that be? Be curious. Be curious to always ask questions and experiment and try to find joy and express and find ways to express your love. Yeah, that would be my suggestion. Yeah. So I'm just translate the question as well. So मेरा दीदी से क्वेश्चन ये था कि अगर आपको दुनिया की भर की युवा शक्ति के लिए कोई संदेश देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे। तो दीदी ने बोला कि आप हमेशा क्यूरियस रहिए, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहिए, और कोशिश करिए ढूंढने की, आनंद को ढूंढने की कोशिश करिए, और दूसरों को प्यार करने की कोशिश करिए। मतलब ये दीदी का आंसर है। अब नाउ दीदी, ऑल माय क्वेश्चंस आर ओवर। आई वुड लाइक एनी टू ओपन दिस स्टेज फॉर एवरीवन, एनीवन टू आस्क द क्वेश्चन। अब मैं दूसरों, अभी आपको जिससे भी क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। आप पहले मैं विक्रांत भैया से स्टार्ट करना चाहूंगा। विक्रांत भैया, ओवर टू यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू दिवांश, थैंक यू दीदी। जय श्री माता जी। आपका वेलकम हम सब युवा शक्ति भाई बहन करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करें। वी आर फीलिंग वेरी जॉयस, वी आर फीलिंग वेरी जॉय while टॉकिंग टू यू। यू आर एक्सपेलिंग, यू आर एक्सप्रेसिंग योर feelings, and we are feeling very beautiful at this time. Thank you so much for coming and guiding us a new way. This is, I'm shortening my words to explain the joy I'm feeling, and thank you so much. My question is only to you. When my question, and the new Yuva Shaktis are coming who haven't seen to Srimata ji that in the form of human body. But when you go in front of Srimata ji, Didi, the moment you feel any your most beautiful feeling you want to share with us when you are in front of Srimata ji. I know it's very difficult to feel express joy in words. Yeah. Um, um, it is like I will describe it like my mom describes it. Please. It's like receiving, it's like being at a waterfall and being under the waterfall of just freshness and love. It's like being so overwhelmed um, by this waterfall of love that you feel is making you really feel your divine sense when you have this. Yeah. Is that the question, right? Was it Much better. I'm feeling your feelings now. Divansh, you can translate, please. मुझे आपका थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था, एक बार आप मैंने ही मैंने क्वेश्चन वो बता देंगे सुंदर तो। स्मृति श्री माता जी के समक्ष, जो सबसे सुंदर स्मृति आपको महसूस हुई श्री माता जी के समक्ष, वो शब्दों में अगर आप दे पाए तो। मैंने यही सवाल किया था कि श्री माता जी के सामने हम बहुत बार गए, तो अपनी श्री माता जी के सामने वो कैसी मेमोरी थी जो सबसे सुंदर आपको लगी, या कोई ऐसा अनुभव आप हम सबको बताना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे भाई बहन युवा शक्ति हमारे ऐसे हैं जो जो श्री माता जी को अभी नहीं देख पाए, श्री माता जी की वीडियो में देखा लेकिन साक्षात दर्शन नहीं हुए। लेकिन हम सब लोग बहुत लकी हैं, पुराने लोग, जिन्होंने श्री माता जी साक्षात में दर्शन किए। तो उस समय आपकी कौन सी सबसे सुंदर अनुभूति थी, मैंने यही पूछा।
Divyansh is frozen by the answer. So I will translate. तो दीदी ने ये बोला कि हम जब श्रीमाता जी के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है, और ये अपने मदर का उदाहरण दे रहे हैं कि मेरी माँ ऐसे बोलती है कि जैसे कि एक पानी का झरना हो, और वो पानी के झरने की जगह प्रेम और डिविनिटी बह रही हो अपने ऊपर। ऐसी फीलिंग आती है जब हम उनके प्रेजेंस बहुत में सुंदर। जाते हैं। बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना। थैंक यू दीदी। यस, वेर इज आवर होस्ट? I think we lost. Host has got overwhelmed with the answers, the quality of the answer, We the got a depth of the tsunami of answer. internet. Yeah. Okay, But it's, anybody else? yeah, I'm Anybody happy else? to answer any question. Yeah. कोई By भी the हाथ उठाओ, कोई भी हाथ उठाओ, पूछो। नंदनी, सूर्यकांत, करिश्मा, वंदना दीदी, माधुरी दीदी। हेलो भैया, सॉरी मेरा लैपटॉप वो बैटरी खत्म हो गया था। हाँ, या कोई there बात you नहीं। are. सॉरी सॉरी माय नहीं, लैपटॉप you बैटरी did जस्ट not say डाइड। sorry, because the job you have done today is amazing. I'm so Yes. happy. I'm so proud of you. The type of translation you have done, it is verbatim. We have not lost anything in between. The quality and the depth of the answers which she has said, you have not diluted anything. Beautifully translated, Yeah. Divyansh. थैंक यू So, भैया, जस्ट श्री माता जी ब्लेसिंग या so like uh, Preeti Didi is saying that she has a family globally. Do not be shy, please open your camera. She is your elder sister. Talk anything, ask anything, whatever you want to say. If you don't want to say anything, come in front of the camera, just to wave. Just let her feel the warmth and love from Uttarakhand. जो भी हमारा प्रेम है, स्नेह है, Thank उनको देखने you. दो। On करो camera, let the vibrations exchange. It Yeah. doesn't know the boundary. Open the cameras, all of you, please. Thank you. This is our family. She's our sister. The type of answers, everybody does not get an opportunity to sit in the lap of the Adi Shakti. The beauty of your soul, the purity of your answers, the depth of your answers, that is the reason why you were clicked like that, which is a epic image sitting in the lap of Adi Shakti. ऑन करिए सभी लोग अपना कैमरा प्लीज, हम गैलरी में जा रहे हैं। अगर हमको कुछ बातें नहीं भी करनी तो हम कम से कम एक दूसरे को देखेंगे, उतना भी काफी है। Yeah. I'm coming to India tomorrow, by the way. Wow, welcome. Yeah. आज भैया आज महिला दिवस है और मैं देख पा रहा हूँ हमारी बहनें ज्यादा हैं, तो टुडे इज ए Oh, वुमेन्स डे। wow. World's Women Day. Yes, yes, यस, yes. दिस इज द Yeah, वर्ल्ड वुमेन yeah. डे। It's so beautiful to see everybody now. I feel very lucky to see you all. This is Now, so can you beautiful. see the gallery view? Yeah. Sorry? Can you see everyone now? I should be able to see. They are Yes. switching on one by one. So go to the Yeah, gallery view. Everybody is on. Wave, wave. Say hello to Didi. Okay? Vibrations don't know distances, just travels. Jai Shri Mataji. Yeah, this is incredible. I wanted to take a screenshot because Yes, I want yes. to Please bring go this ahead. is Anybody who has not switched on the camera, please switch on. अपने भाई बहन है, ऑन कर सकते हैं। कहाँ बैठे हैं, कंघी किया है नहीं किया है, भूल जाओ। सब वाइब्रेशन चल रहे हैं इस समय फुल। ऑन कर दो प्लीज कैमरे को, प्लीज Thank ऑन you कर so दो। और thank आपको you अगर so पीछे ज्यादा साफ सूफ करना है तो बिल्कुल कैमरे के नजदीक आ जाओ, मुंह बिल्कुल कैमरे के पास लगा दो, तो पीछे का कुछ दिखेगा नहीं। डोंट वरी, ओके, दिस इज अ ट्रिक। ओके, ऑन करो कैमरा ऑन करो। गुड गुड, मनोज thank you भैया आ so गए। very much. या, I feel really, really lucky to see all my brothers and sisters यस in यस, India. And it's so lovely to see your faces. So if I see you someday anywhere in the world, wherever you are, I can recognize you. But ब्यूटीफुल thank you so ब्यूटीफुल। much for giving this opportunity. It was so beautiful to be We here to see. are fortunate. We thank you. We thank Jeremy also. He recommended, and he was the first one to come on our weekly Zoom session, because this is not a very old thing we have done. It's about 2 months old, and we hold 4 sessions in a month. Last one is reserved for our internal administrative things.
and 3 are for evolved Sahjogis like you who accept our request and come and grace us and share the vibrations. We are really grateful. We are overwhelmed. A lot of people will not be able to speak also. I am also choked up because this is the power of Shrimataji. This world has become so small. We are sitting at Yes, different places and just see, you knock a door and just say Shrimataji and the door opens without any that's so true. identification. That's very So true. beautiful. And today we have 40 people. Anybody else want to share? Manoj भैया क्या बोलना चाहेंगे आप? If anyone has a question, I'm super happy to answer. Mute. मनोज भैया you are mute. भैया मैं एक्चुअली में सुन नहीं पाया क्या कहा आपने। मैंने बोला कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ अभिव्यक्ति करना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, सुनना ही चाहता हूँ। मैं सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। शीतल है हमारी डांसर, जबरदस्त। शीतल इज अ डांसर, so she can talk to you because you are a trained dancer. She is also a dancer. She performed in the last international Yuvashakti seminar. शीतल, Yes. जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji. माता जी। You should send a video of your dance. I want to see it. yeah, that's recorded. Yeah, That's on YouTube. Yeah. शीतल बताओ कौन सा डांस करते हो आप? I dance Bharatnatyam, classical dance. Oh, beautiful. I'm sure देखो you're really so many people are coming in one screenshot. You have got three people in one camera. Just see, just bye. बहुत अच्छा है, good. Today we have got the full strength. Who yeah. is Sahja the beginning? I cannot see your name. Sahja the beginning. Because you have got a unique name, now you have to ask a question. सर पवन पांडे हल्द्वानी। हाँ Pawan, ask question. Any question you want? जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji. Whatever I have questions, all I have found all the answers in this session. Great. Great. So you are welcome to Hello. Uttarakhand. Uttarakhand is the place from where we are hosting this. Uttarakhand is very close to the school where you studied. It's Oh, in yeah? the next state. हाँ बेटा Yes, लक्ष्मण। हाँ भैया, दीदी बोलो। Yeah, I will be in Dharamsala for the first time since 1994 was the last time I was there, and I will go on around the 18th of March. I will be there for the first time after 30 years, and I have no clue what I will see. When did you It's a visit Nirmal Dham last? I haven't yet in my life. So just give me 3 minutes. I am showing you. I recorded something. I am just showing everyone. Just give me a second. I am wanting to show you something. Is my screen visible? Yes. Okay. This is a drone video shot after Shiv Puja, recent Shiv Puja. Exterior of our Nirmal Dham. This is the main road in front of the ashram. This is the entry what you see now. This is the entry gate. Then we have the dormitory, the accommodation. What you see now is the stall where people are buying all the books and puja material. Then is the dining area. It's a huge dining area. This
taken the drone higher than this because we are close to the airport. Are you all coming for the birthday puja? Yes, most of us. Then I will see you there. Yes, yes. So in the end, you will see the final resting place of the can't even say because this is the place. Beautifully decorated for Shiv Puja. Where you see the dome is the place of the Samadhi. Now you can see the complete ashram. So much. That was beautiful. Thank you. Thank you. So I think over to Divyansh. Once again, we will want to thank our guest who. And what is the time right now at your place? For me, it's 5 p.m. 5 p.m. It is 9:30 in India. We have spent 1.5 hours together. Thank you so much for your time. Thank you, Thank you, Divyansh, guys. for the translation. Thank you all the Sejogis who joined today on the occasion of Women's Day also, and we got a women guest, so lady guest, and that's a beautiful photograph. Everybody will remember you. On behalf of the collectivity, thank you once again. Whenever you come to Uttarakhand, you are welcome. Thank you very much. Yes, that would be Divyansh, great. you Thank can you go so ahead. much. Yep. Thank you so much, Jai Shri Mata Ji. Jai Jai Shri Shri Mataji. Thank you so जय much. श्री माता जी Yes. जय श्री माता जी Have a nice evening. जय श्री Sleep माता well. जी। जय श्री माता जी। जय मेरी श्री माता सभी जी भैया, जय श्री सभी माता जी। भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि सबको जय अभी श्री जो माता जी। जितने भी ये सबको जय श्री माता 35 जी। पीपल हैं ये अगली बार सब लोग 2 लोगों को साथ में ज्वाइन कराएंगे ना। जितने भी 35 यहाँ पर सहयोगी भाई बहन हैं ये अपने साथ में 2 भाई बहनों को इस मीटिंग को और ज्वाइन कराएंगे। हाँ, 2 ठीक है, फोन से ज्वाइन नहीं करना, 2 लोगों को लेके आना। 2 लोगों को और ज्वाइन फोन से भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते नहीं, एक बंदा 2 डिवाइस से ज्वाइन करता है। It's okay. And Divyansh, so beautifully you have managed, yaar, Very good, Divyansh. very good, very good. So nice, Divyansh. Beautifully. Thank you First so time much. I'm listening to you, and This is getting recorded, and edited version will be available on YouTube. I will share it with everyone, including Pritti. अभी Thank you so much. जून सेमिनार आने वाला है दिव्यांश। वेट फॉर नेक्स्ट स्टेप। ओके भैया रेडी है श्रीमाता की कृपा से सब रेडी है भैया। सभी को जून सेमिनार में आना है और कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कॉन्क्रीट तैयार करो। ओ, शो हमारे बानी जी भी आ गए, बानी जी भी आ गए। जय श्री माता जी जय श्री माता जी जय श्री माता जी भैया। हेलो हम बैठे सुन रहे हैं सब आप आज का ओके, मनोज भैया, जय श्री माता जी। ओ, जय श्री बानी जी आ माता गए जी, जय श्री हमारे। माता। We have a special forces person also. Jai Shri Mata We have Ji. got a special forces person also. So he does meditation while jumping from the parachute. वही चल रहा है बड़ा वाला वो दिखाते ओल्ड प्लेयर ऑफ सहज योगा। Yeah. So thank you once again. Thank you everyone. Thank you Divansh. Thank you everyone. We thank you, Mataji for this Mataji. beautiful meeting, exchange of vibrations. Thank you. जय श्री माता जी टू। Thank you. Bye bye. Jai Shri Mataji. जय बाय थैंक यू दीदी। जय श्री माता। Jai Shri Mata Ji. सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता माता जी। जी।
श्री माता जी। जय श्री माता जी। भैया ये जून सेमिनार जो हमारा उत्तराखंड का होना है, ये इसका जगह का हो गया पूरा पक्का, कहाँ हुआ? भैया अभी अंडर प्रोसेस में है, अभी अंडर प्रोसेस है, हो जाएगा एक एक इस हफ्ते शायद, उम्मीद है फाइनल हो जाएगा। मनोज भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, जय श्री माता जी। इस हफ्ते मिलेगी अपडेट, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल भैया, जय जय माता श्री जी। माता जी। ओके, जय श्री माता जी। सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप सभी माता जी, थैंक यू भैया, जय श्री माता जी।